Thursday? Friday. Get your PAMPAM fix. Right here on Radio D Hotties, 1310 AM, 92.9 FM, starting at 5. Come alive! Hey guys, this is Deepika Padukone and you're listening to me on Radio De Hotties with Arzu Baba and Faltu Rani, where entertainment just got hotter. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations. Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! Bam Bam! Namaskar. Namaste. Namaskara. Vanakkam. Khushamadi. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. मी गांधरी वंदनम Jai Swami Narayan. जय श्री कृष्ण Jai Janindra. हमारे इस्माइली भाई बंधुओं को बोल दे या अली मदद मौलानी मतलब बोलते हैं सारे फीजिए मतलब बोलेंगे नीसा बुला बनजान हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं से फालतू बाबा and of course myself your darling प्यारी फालतू रानी बंधु जानी है अगर आप सोच रहे हैं वाह ये क्या है ये कोई AIB है नहीं ये NRI है what? whatever No seriously what are you talking about? I don't know what is that show of that guy no I don't know what AIB is it's that guy right that what is that Republic TV the our Republic. layout and setup is like a Republic TV Beria wants to know. Deepa chill chill Deepa chill and of course today let's introduce people in our studio. Some of you already know like me for sure very popular person apart from me of course we have Faltu Rani also again a very popular person and right next to of course we have Deepa who actually right there doing namaste for us traditional way and then along with us we have Pinky oh I'm sorry Ponky Ponky no Inky hey Reva ji Reva ji Yes. Also known as नमस्ते रेवा जी कैसे हैं आप रेवा जी एंड ऑफ कोर्स लगता है आपका आवाज नहीं आ रहा है आप थोड़ा बात करेंगे आप नहीं आप वो पुट नहीं आप माइक पे बात करो थोड़ा पैम पैम असली नाम बोली दो आप पैम पैम असली नाम तो आपका क्या है पैम है वेरी गुड आई लाइक दैट नेम आई कैन लिव विद दैट नेम व्हाट अबाउट यू गाइस हमारी विभा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है अरे पहचान लेंगे सब ड्रीम लोग कम ट्रू डेफिनेटली वन ऑफ द आइटम्स ऑन माय बकेट लिस्ट क्या बात है really सीरियसली not bad रेवा जी तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस you're welcome anytime तो of course we have a full house today and अगर आप सोचते हैं अरे यार ये विदेशी वीरवार मतलब क्या है you heard of गुरुवार वीरवार क्या है वीरवार is thanks to the the Punjabis in the house only one person yeah and the person also is not a Punjabi in the first place Botswanian Botswanian is actually wannabe Punjabi पंजाबी एट हार्ट no she's actually not even क्या पंजाबी Botswanian हट क्या बोला आपने पंजाबी एट हार्ट पंजाबी हट बोला आपने ओ माय गॉड Hey. प्योर पंजाबी what if your mom listens to what he says now Punjabi hut नहीं बोल रहा यार My mom is listening right now. I know she is also watching right now, Bharat. And अगर आप सोचते हैं यार this is interesting. What kind of a layout is this wonderful layout? कभी घमंड वेरी गुड लेआउट आलतू बाबा अभी तुम्हें चाहिए ना मैंने बोल दिया अभी मुझे नहीं चाहिए अदिति जी one welcome she's saying whoa lady power she's saying absolutely yes why exactly you never say it when I am there all by myself you can't say man power is it देखो अदिति तुमने ठीक बोला नाम के वास्ते हम 3 लोग हैं अभी बोल कौन रहा है कंटिन्यूअसली फालतू रानी कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो मैं इसीलिए you people are wondering कि जब आना जी ने हमें लिखा कि 6:20 हो गया कहाँ है तुम्हारा शो तो मैं सोच रही थी अगर हम लोग आधे घंटे का शो करेंगे उसमें आधा घंटा विभा बात करेगी मैं तो चुपचाप बैठी हूँ भाई दीपा बात करेगी हम क्या बात करेंगे ओह माय गॉड देखो हमारी रेप्यूटेशन दीपा वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस मैं बोल रही थी किशन सॉरी आलतू बाबा किसी को बात करने नहीं देगा हाँ और तुम उल्टा मेरे ऊपर आ गए अरे मैं कोई तुम्हारे ऊपर मैं कहाँ तुम्हारे ऊपर आ गई नेक्स्ट टू नो थैंक यू ये भगवान
तो आज चलो ठीक है, आज विषय पे विषय से मत भटको। बाय द वे वो आ गए इंडिया से, जब पता चल गया कि हम लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं यहाँ पे। यो आ गए वापस। गुड इवनिंग प्रिंसिपल साहब। Welcome back. I just want to say one thing. If at all you feel like, oh, why is everybody properly looking at each other? But only Deepa is like, lost in thought. She's looking at the beautiful face, making sure the perfect angle comes up on camera. My mic is blocking. अभी मैं ब्रेक लूंगी, मुझे इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं दूसरा चाहिए मुझे। अच्छा, आवाज में आ रहा है? नहीं, मैं हेल्प करेगी, मुझे तो सुनाई दे रहा है सब। वो हेल्प करेगी आपको for sure. लेकिन फाल्गुनी क्या कर रही तू फाल्गुनी? मैं दीपा जी को हेल्प करने वाली थी आज। जब तो कोई हेल्प कर ले दीपा जी को, हाँ. तो एक काम कर, तो अपनी you're going to step out of the thing right now, I know. But let's ask विदेशी वीरवार। तो टॉपिक जो लेके आई है हमारी पिंकी विभा जी बताइए। हाँ. आज आप विदेशी वीरवार क्यों लिखे आप? And what is this thing about वीरवार? Why did you want to choose वीरवार instead of गुरुवार? And also, what's this विदेशी thing about? So Videsi is all about, people like all of us actually who are Indians living outside India. And Veervaar is the equivalent of Thursday in Punjabi. So I had to bring some of that element in too. So that's why Veervaar versus Guruvar. So, मतलब आप बोल रहे हैं कि Videsi, we are people away from India, correct? So are you talking about people who are fresh off the boat or people who are settled down for some time? Because इसमें भी categories है ना, तो yes, कुछ लोग हैं जो अरसों से हैं, who came there, and there's also first generation Indians who actually also are pretty much our age group in this world, correct, out of India. And then there also is the portion which is the new generation of second generation Indian. And सभी लोगों को विदेशी बोल सकते हैं, because देश में नहीं है तो विदेशी हो गया ना, मतलब हम सब विदेशी हैं. I'm talking about everybody across the board. So I'm talking about people like me who were very young when the parents moved outside India. People like our kids who were born outside India, as well as people like our parents, or us who've been living outside India for a few years. So yeah, I mean, basically, I just thought it would be interesting to talk about, the influence that Bollywood has had on all of our lives. Impact of Bollywood on our lives. Absolutely. Well, technically, जो इंडिया छोड़ के चले गए, छोड़ के बाहर आ गए, वो परदेसी हो गए ना। छोड़ छाड़ के वो परदेसी हो गए। परदेसी हो गए। जो विदेशी होम ग्रोन माल है, माल मतलब विदेशी माल बोलते हैं ना यार। और मैं अल्तु बाबा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बताओ। हम लोग फ्रेश ऑफ द बोट नहीं है, हम लोग बोट से नहीं है, हम लोग एरोप्लेन से। गुड पॉइंट दीपा। यस, ओके, आप एरोप्लेन से हैं। हाँ, शुगर है पैराशूट से ड्रॉप नहीं किया इसको, लगता है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एरोप्लेन से हैं तो एरोप्लेन से हैं भाई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो वेरी गुड। हाँ, तो ये, लेकिन what you're talking about the impact of, आपने बोला कि impact of Indian cinema. Yeah. क्या impact हुआ? I don't understand. So personally speaking, I'll speak for myself. I was 2 years old when my parents moved from India, and we grew up in Africa, various countries in Africa, Zambia, Botswana. And the role that Bollywood has played, at least in my life and my brother's life, and even my friends like me, has been significant in terms of it has kept us closer to our culture. It's very difficult to understand things, being an Indian outside India, unless you have exposure to the type of things that we see in Bollywood. It's not always a true portrayal of what India is like or Indians are like, but for instance, I think I would not be speaking Hindi or singing in Hindi or loving Bollywood or loving, Indian movies as much if I didn't have that exposure. So my love for Bollywood or for songs, music, the language, the culture, a lot of it was influenced, of course, by my parents, but also by Bollywood. So Bollywood has played a very pertinent role, and even today my daughter, who doesn't speak Hindi, she still listens to music with me, watches movies with me, and movies ke through she's able to relate what goes on in her day-to-day life. And so I think it's really, really important, especially when it comes to keeping us all connected.
सॉरी नहीं मैं तो बोल रही हूँ हंसी आ रही है। नहीं वो कमेंट्स आ रही है आपके लिए, बोल रही है अदिति, पूछ रही है विभा जी इतनी सीरियस क्यों हो गई सडनली? पहली बार अभी देख अभी शर्म आ रही है। विभा मैं तुझे विभा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो कौन से क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बोलने वाली थी हम लोग माइक ऑफ कर दो। अरे नहीं कमाल, अरे तुम लोगों के बिना कैसे चलता है। मैं कल गाने वाली थी, तुम लोगों ने कल शो नहीं किया। वो राखी बोलती है ना करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो मैं ऐसे फोन लेके बैठी, मेरे आलतू फालतू आएंगे। कल ये लोग आएंगे और 8 बज गए। सॉरी दीपा जी, 8 बजे तक वेट किया आपने? अरे वाह, इतनी शिद्दत से। नहीं सुनना, कुछ मार्जिन देती हूँ मैं। Margin of error, right? That's what is called. Actually 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से आज बहुत बिजी है यार ये दोनों, बहुत बिजी है। They are awesome, जो भी कर रहे हैं awesome कर रहे हैं। हाँ तो अभी आप क्या पूछने वाली थी दीपा जी, आगे जाइए। मैं पूछने वाली थी तुम्हें कोई ऐसा मूवी पता है जो shows the NRI life in Bollywood? I mean there are movies but I don't think it's a very good portrayal. मतलब जैसे अगर आप वो कभी अलविदा ना कहना में all of them were living outside India, वो क्या था? अरे ऐसे नहीं, अच्छा एक काम हम लोग पूछेंगे ना और ऑडियंस से पूछो। yes please call in, chime in। उसके अलावा नंबर बोलो विभा जी। 408। हाँ I know that रोज फोन करती हूँ but I've saved it actually as Radio D Hottie, so that's my excuse for not remembering। 91224799। Yeah, I got it। Good job। क्रिकेट से वही पढ़ा है वहाँ पे। मैंने नहीं पढ़ा, promise। अरे इधर सामने नहीं मैं वहाँ देख भी नहीं रही ना, वही प्रॉब्लम है ना, देखते नहीं आप। तो ये वैसे अगर आप टोटली कन्फ्यूज्ड है बंदजन, वही शो है आज। जो कन्फ्यूज देसीस होते हैं, मतलब जो कंफ्यूज्ड है उनको और कंफ्यूज कराने के लिए आज हम लोग आ गए हैं विदेशी वीरवार लेके। एंड अगर आपको यहाँ पे चाइम इन करना है, स्टूडियो का नंबर है 4089122479, दैट्स 4089122479। आज ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम जहाँ पे हम जो लोग भारत के उस पार, I mean, और पीपल आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुए हैं और बॉलीवुड को देख देख के बड़े हुए हैं। सो पीपल जो शायद बहुत ही छोटे उम्र में इंडिया से निकल गए और बॉलीवुड को देख के टोटली बिगड़ गए। हाँ मैं बिगड़ गए। अरे नहीं, हो सकता है बिकॉज इन इंडिया हमें मालूम है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि यू रन बिहाइंड ट्रीज एंड यू सिंग सॉन्ग्स एंड यू डू ढिक चक छम 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 इन द रेन, बट इट रियली डजंट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन फालतू रानी इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं बिगड़ने के लिए, इंडिया में भी बिगड़ सकते हैं। नहीं बॉलीवुड, जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है। अच्छा दैट्स ट्रू। एंड वैसे आप विभा जी से पूछो, वो तो सोच रही होंगी कि पोनीटेल बांध के मैं ऐसे नाच कैसे करूंगी, बारिश जब होगी तो एक टाइगर श्रॉफ मेरे लाइफ में भी आएगा। टाइगर श्रॉफ ना जी ना बख्शो। अच्छा ठीक है। नहीं विवाह तुमको ऐसे ही लगता था क्या इंडिया में सब लोग ऐसे ही नाचते लगता था? नहीं मुझे नहीं, बिकॉज वी यूज्ड टू विजिट इंडिया आल्सो रेगुलरली, पर मुझे ये लगता था कि बड़ा ब्यूटीफुल लव स्टोरी, मेरी भी शादी होएगी, मेरा भी प्रिंस चार्मिंग घोड़ी पे आएगा, व्हिच ही डिड, बट I think there's also there are also some cons. For example, अगर आप देखो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, in that शाहरुख खान plays an NRI, और वो क्या दिखाते हैं, वो बिगड़े बाप की बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मतलब तूने मूवी अच्छी तरह से नहीं देखा अभी भाई, एक बार और एंड में वो सुधरता है ना, बट इन द बिगिनिंग इज लाइक पॉप्स ही इज डूइंग ऑल द पॉप्स एंड ऑल दैट। ये अमरीश पुरी की पार्टी है हम लोग। नहीं, हम जो बाहर वाले देसीज हैं, हम ऐसे नहीं होते यार, वी आर नॉट लाइक दैट। एंड बॉलीवुड हैज ऑलवेज पोर्ट्रेड most NRIs in a negative way, sadly. So I am proof that is not true. Okay, I want to say something. I want to say something. I want to say something. I need to say something. I want to say something. There's a caller on hold. Bolo. Hi, welcome, PAMPAM, Konnichi.
चलो जी, आज तो सही में आप जो बोल रहे हो बीप हो रहा है। मोहम्मद मर्चेंट। ओहो मर्चेंट साहब, भाई मैं बड़ा नाराज हूँ अल्लाह की कसम आप लोगों से। क्यों? भाई 5 घंटे तक कल पकड़ते रहे, कोई सारा जवाब ही नहीं। लेकिन पकड़ के ना छोड़ना नहीं सर। ऐसा पकड़ा हाँ। जो पकड़ना ही पकड़ना था पूरी रात। वही तो बोला सर, नंबर पकड़ एक के ना जवाब क्यों छोड़ना नहीं आ नहीं रहा? बोला मैंने। कहाँ के हाँ। छुट्टी पर है, क्या है क्या है? छुट्टी पर? सर क्या पकड़ के बैठे थे पूरी रात? अभी फोन लगा है ना मर्चेंट साहब, अभी आप बात बच्चन कर साहब। रहे हो। बच्चन साहब फोन नहीं, लगा। मैंने मर्चेंट साहब बोला आलतू बाबा। देखो मर्चेंट साहब, अभी देखो आपका आवाज नहीं आ रहा है, कुछ पीक 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 आ रहा है। हाँ हाँ सर, आपका फोन चेंज कर लो, आप नया फोन ले लो। नहीं नया फोन ले लूं? हाँ ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ऐसे अरे करेगा? हम है ना, हम फंड रेजर करेंगे। ऐसे पूछो ऐसे पूछो। हाँ, लेकिन इनसे पूछो ये ये है ना, सर। आई एम सॉरी, आपका जो फोन पे एक बीप साउंड आ रहा, लगता है आप कुछ बोल रहे हो बहुत इमोशन के साथ। पॉलिटिशियन है अपनी, उसके पास बड़ा पैसा से बात करते कि भाई टेलीफोन नया चाहिए। हाँ सर ठीक है, लेकिन सर कुछ बीप साउंड आ रहा है आपके लाइन पे। नहीं वो प्लीज। क्या है ना आलतू बाबा, आज बहुत एक्साइट हो गए तो सारे बटन दब गए। हो सकता है, उनके फोन के क्या सोच रहे हो आप? हो सकता है मैडम। इसीलिए बीप 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 हो रहा है बेचारे। भी हो रहा है। हाँ शायद वो फोन के बटन सभी दब गए। हाँ प्रणब जी कॉल करो। यस। हो जाता है कभी कभी क्या? हाँ विभा, फोन्स के साथ। मर्चेंट साहब मेरा नाम क्या है? और रख दिया उन्होंने फोन। मर्चेंट साहब फोन आज आई हैं विभाजी। हाँ, नॉट रेवा जी। तो आज मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, और हमारी विभाजी बहुत प्यार से इस थीम को लेके आई, क्योंकि उन्हें बोला कि उनकी जो इम्प्रेशन थी हिंदुस्तान की, मतलब भारत हिंदुस्तान की, कि ये ऐसी इमेज थी उनकी कि ये हिंदी फिल्मों से जो बनी हुई थी वैसी वाली इमेज थी कि यहाँ पे हर कोई शाहरुख खान जैसे, हर कोई घोड़ी पे आता है। हाँ, हर कोई घोड़ी पे आता है। हर कोई घोड़ी पे आता। हाँ, अगर किसी से प्यार हो गया तो छिप छिप के कारों में कहाँ जो कारोबार में कारोबार शुरू होता है। हाँ कारोबार, हाँ जो लबों का कारोबार होता है वो सब हो जाता है। तो पता नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो विभाजी आपका सबसे पहला, जब आप मतलब कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में आप पली बड़ी, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ, आपका फर्स्ट मूवी कौन सा था? हिंदी फिल्म कौन सी? Oh my that's a God, good one. that I actually cannot remember because I have been watching Desi movies with my parents since the age of 2. अच्छा ठीक है, फिर भी कोई याद रहेगा ना Some movie बचपन that का। really stands out, I think it would be more जो movies जब when I was in my teenage years, I think some of those movies बरसात की will रात। stand. What? 16 साल नहीं बाद। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी यंग भी नहीं हूँ। 16 साल बाद। No, 16 साल की। I think एक a दूजे lot के of- लिए। Sharabi is a movie that I vividly remember sitting and जवानी watching with की my हवस। parents. हाँ, हाँ, अधूरी नहीं, हम अधूरी बचपन- हवस। अधूरी आस। हम बचपन में इस टाइप की मूवीज नहीं देखते थे। बचपन नहीं जी, आलतू आप- बाबा। आप टीनेज की बात करते हैं। जवानी दीवानी। चलो अभी एक फोन बज रहा है वहाँ पे, देखो। हाँ देखते हैं जवानी आ रही है? शबनम हाँ। की। लेट्स सी जो हेलो नमस्कार, आप कार्यरत पैम पैम के विदेशी वीरवार में हुजूर। हेलो मोहम्मद मर्चेंट। मर्चेंट साहब, गुड। अभी ये आपका लाइन साफ है। हाँ, अभी डांटो इनका, थैंक यू सर, थैंक यू। डांटो क्यों? इनको डांटो। क्यों? अरे अभी शो में कौन कौन कल मैं है? हाँ, 1.5 घंटे good तक question. पकड़ के खड़ा रहा। अच्छा सर, ये क्या पकड़ कर नहीं पूछेंगे हम लोग। ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कल प्रोग्राम था नहीं था। नहीं था, नहीं था। कल प्रोग्राम नहीं था। नहीं था मर्चेंट साहब, हम भी वेट कर रहे थे। कल था नहीं। नहीं हुआ ओह था। माय गॉड, तो भाई आप लोग पहले से बता दिया करे ना। हाँ बस दीपा भी 8 बजे तक वेट कर सर रही थी। यही तो बताता हूँ मैं लोगों को, लेकिन बात नहीं मानते लोग, क्या करें। ये हम मानेंगे सर, हम सर, तो आपको बस इसीलिए I love you, बड़ा वो पीर मानते हैं ना। हाँ पीर, अरे आप मुझे पीर मानते हो, वेरी गुड बाबा पीर से वेरी गुड। पर सर लेकिन और रेवा देवी जो है अपनी पॉलिटिशियन है, लेवा जबरदस्त। देखा, रेवा, ये रेवा आज कौन है? मर्चेंट। ये रेवा परसों बात हो रही थी ना, कौन थी? रेवा जी थी, कौन थी? ओ देखो रेवा जी है ना वहीं पे, ऑनर है ये। हाँ, ये रेवा पॉलिटिशियन सर, जबरदस्त।
लेकिन सुबह में मुझे कोई, दोपहर में कोई, शाम में कोई, रात में कोई। सर, मुझे ऐसी गुराटी मारती कि आदमी पागल हो जाए। सर मुझे आपसे पूछना है कि ये रेवा कैसे निकला? अरे बाय द वे वी हैव वन मोर कॉलर वेटिंग इन लाइन। देखो बज रहा है वहां पे हमारा फोन। बट सर ये आप बताएं, आप कितने साल से आप अपने देश से बाहर हैं? गुड क्वेश्चन भाई हम तो आप समझ लीजिए कि 32 और 40-42 साल हो गए। 42 साल। अभी 42 साल का मतलब आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा हमारे विभा जी को, कि विभा जी को इतना हिंदी नहीं आती। हाँ, 42 का मतलब क्या है विभा? आई रियली डोंट नो। हाँ, 40 कितना मालूम है? नहीं, 40 भाई पॉलिटिशियन का मतलब है कि सियासतदान जिसे कहते हैं ना। हाँ, 42। तो आप बताइए सर। उर्दू में और हिंदी में सियासतदान कहते हैं उर्दू में। हाँ सर तो 42 इयर्स हो गया। 42 इयर्स। 42 मतलब वाओ वाओ वाह वंडरफुल सर। तो कैसा रहा आपको? आपको पसंद है आप बाहर रहना कि क्या है? नहीं, मैं सऊदी में था तो हर साल जाता था। हाँ अमेरिका से भी मैं हर साल पाकिस्तान जाता हूँ। हाँ मेरी बहनें, मेरे चचा के बच्चे, हाँ। मेरी मोमानियाँ, वाह। तो उनसे मिल के आते थे, बड़ी खुशी होती थी। तो हर साल आप जाते थे, उनके साथ गपशप मारते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे और पुरानी बातें करते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे बचपन में। हाँ, तो हमारे जो यहाँ पे जो दीपा जी है ना, जो वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। क्या पूछना चाहते हैं आप कुछ? जरूर। हाँ बोलिए दीपा जी, क्या पूछना चाहते हैं? तो आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है जिसमें NRIs का लाइफ दिखाया गया है? कोई आपको कोई मूवी याद आता है आपको? नहीं, वो कल आपने बागबान का जिक्र किया था शायद, कल या परसों की बात। बागबान में? हाँ, बागबान। तो हाँ। बागबान के नाम की एक फिल्म और भी बनी थी जो कि बागबान। राजेश खन्ना था, गोविंदा था, हाँ जूही चावला। सर, जूही चावला की जूही चावला के बच्चे लोग जो है वो बाप को निकाल देते, माँ तो मर जाती है। सर, आपका मालूम है तो कि बच्चे जूही लोग बाप चावला को घर के बाहर निकाल देते। सर आपका मालूम है क्या? नहीं, ये आज का टॉपिक है जो बाहर हाँ। रहते देसी। विदेशी वीरवार। जो हम लोग, जैसे हम लोग सब हैं, आप- अपने देश को छोड़ के बाहर हैं, हाँ। तो उस टॉपिक पे कोई मूवी आपको है जो बनी है रिसेंटली भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, आप कोई नाम बताओ मूवी का। हाँ, मूवी का नाम तो ये था कि एक ऐलान फिल्म थी। हाँ, सुरिंदर उसमें कौन बाहर जाता है देश छोड़ के? हाँ, और देश। ये ऐलान में हाँ वो एक बंदा होता है अपना, हाँ। उसको इंडियन में नौकरी करने का शौक होता है, ओह अच्छा। तो वो बाई शिप जाता है लंदन, हाँ, और फिर वहाँ से वापस आ जाता है अच्छा। कि भाई ये तो कुछ भी नहीं, इससे तो अपना वतन ही बेहतर है। हाँ, ऐसे बहुत लोग ऐसे। हैं। वेरी नाइस। अच्छा है और फिल्म बड़ी जबरदस्त थी, उसमें हीरो सुरिंदर था, नहीं उसमें मनोहर सुल्ताना हीरोइन थी। बड़ी प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छी। जब विभा टीनेजर थी वो देखी नहीं होगी। हाँ देखिए नहीं, ऐसे ये- देख फिल्म ये देखी आप- नहीं। वो तो अभी पैदा क्या होने 5 से पहले की। साल पहले आई मालूम है है। सर। सॉरी, वो नहीं मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कहा ये भी बता दूं। हाँ, बता करेक्ट सर, वेरी गुड, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू much, मज्जर मगर साहब। वो बड़ा प्लेन, वो शिप में भी बड़ा परेशान होता है क्या, कि अच्छा, कहाँ में? सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ लेटना है, हाँ। उसकी समझ में नहीं आता। लंदन आ गया, ओह, अच्छा। वाओ, वेरी नाइस, हाँ, वो एक थैंक यू, हफ्ते में थैंक यू। लंदन आ गया, 1 हफ्ते 10 दिन में। वेरी नाइस। वेरी शिप तो ऐसा चलता है ना, आराम से चलता है। हाँ हाँ। हाँ, देखेंगे। पर सर तो वो thank- उसको घुमाते फिराते लंदन में बोला कि तू उतर हाँ और अब निकल यहाँ से जा। वेरी गुड। लेकिन Thank सर you. आज का Thank you, थीम मर्चेंट आज सही साहब। बताया, लेकिन देखो ये जो है ना, ये देखो 42 ईयर्स से यहाँ पे ही आउटसाइड द कंट्री। वाओ। तो है ही ये देश, मतलब उनका पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी ही इज आउट ऑफ हिज कंट्री फॉर सच अ लॉन्ग That's a टाइम, long राइट? तो आई एम श्योर, लेकिन एक चीज है, ये जो है हमारे जो मोहम्मद मर्चेंट साहब, विभा जी आपको मालूम नहीं कि मालूम हो सकती है, ही एक्चुअली स्टिल स्टे इन टच विथ हिज कल्चर। ओ फिल्में हो या क्या बोलते हैं उसको, फिल्में हो या ड्रामाज हो, हाँ। कल्चरल सॉन्ग्स हो, शेर व शायरी हो, सब कुछ जो उस सब के टच में थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली कीपिंग टच। आर यू कीपिंग इन टच ऑफ ऑल दिस थिंग्स? Absolutely. That's why we have that romance with No, the no. Bollywood. That is not through Coffee with Karan, by the way. That's going to be I'm not gone. a big It's not coffee coming with back. Karan fan. It's coming on OTTs, by the way. No, It's no. gonna be coming on OTTs. That's what he इट्स said. ऑलरेडी ऑन OTT। क्या Oh my बोल रही नहीं, हो? God, मतलब आज new- का new, आज का new थीम पे seasons क्या हैं। फोन पे फोन बज रहा है यार। इट्स गुड। वाओ। नमस्कार, आप खर्च आप अगर आप 50-60 साल से भी बाहर रहे, हाँ तो आपको वतन की खुशबू, वतन की मिट्टी जरूर याद आएगी। very good. Yes, सही yes, बात। sir. True.
सही बात तो एक मिनट क्योंकि आप यहाँ पे आपके बच्चे शायद पैदा हुए पले बड़े, राइट? तो क्या उनका जो नज़रिया है हमारे वतन का, जैसे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो उनका कैसे वो नज़रिया शेप अप हुआ? उनके हिसाब से बॉलीवुड देख के, जैसे हमारी विभाजी हैं कि वो सभी इंडिया वाले लोग ऐसे नाचते हैं, ऐसे ड्रेस करते हैं, ऐसे होते हैं, वैसा नहीं, वाला वो मेरे बच्चे सारे पाकिस्तान में पैदा हुए। अच्छा, 2 बेटे और 1 बेटी, और बोर्न इन पाकिस्तान। मगर वो हमारा जो बड़ा वाला है ना, वो हर दूसरे साल पाकिस्तान चक्कर जरूर लगाता है। अच्छा, ओके। रहने को घर नहीं है, मगर वो होटल में ठहरता है और पाकिस्तान जाके उसको बड़ी खुशी होती है, शॉपिंग करता है, लोगों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, बाहर खाते हैं, पीते हैं, गपशप मारते हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक। मगर मेरा छोटा वाला जो है ना, वो अमेरिकन है बिल्कुल। वो बजाय इंडिया पाकिस्तान जाने के हवाई जाता है, सिंगापुर जाता है, नाइस ह्यूस्टन जाता है, शिकागो जाता है, वो वतन नहीं जाता है। बोलता नहीं डीडी मजा नहीं आता है। तो मैं बोला अच्छा भाई, मजा नहीं आता है, सारे तुम पढ़े लिखे बड़े वहाँ हो गए, और अब तुम यहाँ आओगे तो कहते कि मजा नहीं आता है। लेकिन मगर उसने हमारी दादी की बड़ी खिदमत की, हमारे छोटे वाले ने जो नहीं जा रहा है पाकिस्तान, वो दादी के साथ रहा 5-6 साल तक, और दादी को खिलाना पिलाना, दवा दारू, हाथ पैर दबाना, हमारी दादी की बड़ी खिदमत की। दादी ने बड़ी दुआएं दी उसको, माशाअल्लाह बड़ी दुआएं दी मेरे बच्चों को, माशाअल्लाह। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। सुनते रहिएगा सर, we'll have more people calling in right now, क्योंकि आपने अभी कॉल कर दिया। तो वेरी गुड। तो विभा जी, आपने जो बोला ना, जो टॉपिक आज तुम लेके आई हो जी, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, एंड वॉट एवर यू सेड, इट्स नॉट ट्रू विथ एवरीवन, लाइक व्हाट फालतू रानी जस्ट सेड, राइट? कुछ लोग तो मतलब अच्छा है यार, बलाचूटी करके अगर दूसरे देश में आए ना, कंप्लीटली उधर के हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन नो, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया स्टिल, बिकॉज जब हम छोटे थे, पेरेंट्स लेके जाते थे हमें, एवरी 2-3 years वी वुड गो। माई इन-लॉज आर बेस्ड इन इंडिया, तो हमारा चक्कर वहाँ लगता रहता है, मेरी बेटी का भी लगता रहता है। सो वी आर वेरी मच इन टच विद आवर रूट्स एंड आवर कल्चर, थैंक्स टू फैमिली दैट्स स्टिल देयर, एंड थैंक्स टू बॉलीवुड ऑफ कोर्स। यस, चलो फोन बज रहा है आपका फातिमा। हेलो पैम, कौन है जी? हाय पैम। हाय जीना। हाय जीनू। हाय जीना। Are you gonna come home? Of course I'm gonna come home. After the show, my baby, I'm coming home. Are you proud of me? I like you on the show. Oh, thank you, baby. Thank you. So Jenu, let me ask you a question. Do you like Hindi movies? Do you like Hindi? Yeah. Which is your favorite Hindi movie? I like, I don't know. Okay, give me a Hindi song you like. Which Hindi song do you like? Yeah, Jada, any song. You and me listen. Lakdi ki kaati. Can you sing? Can you sing a little bit? One line for us? No. No? It's okay, baby. It's fine. Thank you for calling, though. I love you. Mama. Bye, my baby. Pam, so sweet. Oh, that's exactly right. That's right. Thank you. Jena. ये लकड़ी की काठी से एक किस्सा याद आ गया मुझे। तो जब मेरी बेटी छोटी थी, तो तब इतना मतलब यूट्यूब में इतने सारे लाइक ये नहीं थे ना, वीडियोस वगैरह। तो मैं नया वो ये मासूम मूवी का सीडी लेके आई थी। तो उसमें बिकॉज ऑफ द सॉन्ग आई बॉट द मूवी सीडी, तो मैं लगाती थी रोज उसको। तो मैंने खुद देखा नहीं था मूवी क्या है, ठीक है? उसमें मूवी जो है वो शी इज अ बैड मॉम, आई मीन शी इज अ स्टेप मॉम, लाइक राइट, यू नो, राइट टू द बॉय, हाँ, टू द बॉय। तो वो चेतना मैं खिलाते वक्त वो ऐसे ही इतने घूर के वो मूवी देखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा, एक सीन है वहाँ रोता है वो गाने के बाद। तो एक्चुअली गाने के बाद मुझे खत्म करना, मतलब आई शुड हैव ऑफ इट, तो मैंने ऐसे मूवी कंटिन्यू रखा। तो वो बच्चा रो रहा है और ये जोर जोर से रो रही है। वाओ, उस दिन से मैंने वो चलाना बंद कर दिया मूवी।
Yeah, I mean, so this is what I was trying to say. See, because I was influenced by Bollywood. मुझे इतना शौक है movies का ये सब. And now my daughter, same thing. हर हिंदी पिक्चर कोई और जाए ना जाए, मैं और जेना जाते हैं. And when she listens to me, even in the car, we listen to a lot of Indian music. Chitti Ankalai is another one of her favorite songs. अगर Bollywood ना होता, it would be very difficult, especially in a culture as strong as the American culture, for our children, I think, to find, you know, some sort of attachment. Forget our children, हम लोग भी जब हम आपस में मिलते जुलते हैं, a lot of times we'll say, hey, ये picture निकली है, let's go watch it as a group. So it helps us all bond together as, तो as Indians. आप ये बताइए, आपके जो जहन में आता है, which is a movie that kind of made an impact on you, जब आपको लगा कि you know, obviously if you're growing up outside of India, you would remember one movie. Like for me, I have seen I think 3 Italian movies. I remember one very distinctly because I've only seen that much. Right. But one the first one that I saw, and that has stayed with me, right? So there'll be which is the first movie that made a huge impact on you? I remember growing up, we watched a lot of Amitabh Bachchan movies because Amitabh Bachchan was at his peak at that time. Lot नहीं पूछ रही हूँ, वो एक movie would be Sharabi. Sharabi had a big impact on me. No, not because I'm a Sharabi. But not because of that. She is, but she's not impacted by that. No. I mean, I just loved his acting in that. I loved the Jayaprada. You know, I loved the way she looked. Songs. और उसके outfits बहुत सुंदर थे. That had a great impact on me. Even as I don't know, maybe 9 or 10. I don't remember. But yeah, I think I was around that age. तो आपने से कहा किसी के विंडो के नीचे लगा बिल्कुल. Me and my brother actually, we would do scenes from Sharabi. Oh. So he would be the Jayaprada. He used to be Jayaprada? Julie baby dancing, and I would be the Amitabh Bachchan. Having You Amitabh Bachchan. So I know he's gonna see this. मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे कुछ कहना है. अल्तू बाबा, ये सब तमाशे करते थे. मैं तो सुन रहा हूँ आपका. ओ, किसी ने तुम्हारे खिड़की के नीचे आके बोला विवाह. यही तो बदनसीबी है. None of that happened. एक मिनट, मतलब क्या बदनसीबी है कि आपके यहाँ पे 2 फ्लोर का नहीं था, 1 ही फ्लोर का था घर. खिड़की के नीचे तो आराम से खड़ा निकल होके के चली ऐसे जाती किसी है. ने कुछ नहीं बोला. तो तू इसलिए मुझे ड्रामे करने पड़े बचपन में. बुलाने की जरूरत नहीं थी. अच्छा, इसीलिए आपको ड्रामा करना पड़ा. क्या बोला आपने? इसीलिए आपको ड्रामा करना पड़ा. इसीलिए मैं और मेरा भाई हम we would enact all this out because दोनों को पता था हमारे साथ ये सब होने वाला नहीं है. क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप इंडिया में, आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत ज्यादा. नहीं ऐसी बात नहीं है. ऐसी बात है. अल्तू बाबा, मैंने things happened before they should have happened. What? We don't know. अल्तू बाबा, मैंने ऐसे क्यों बोला पता है? वो गाना है ना, मीना मालूम है, इसीलिए बोला. तेरा ठिकाना यहाँ है तेरा दीवाना. रेवा कहाँ है तेरा दीवाना? ओ सॉरी, विभा कहाँ है तेरा दीवाना? रेवा ले आया तेरा टेवा. Oh my God! वही हुआ. फिर टेवे आ गए. चट मंगनी पट गया. कहानी खत्म. तो कहाँ खत्म? अभी तो शुरू कहानी तब शुरू होती है ना. हाँ, नहीं तो फिर तो आप पे जो इम्पैक्ट हुआ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, राइट? क्योंकि दीपा, जब हम लोग बात करते हैं जनरली, मैं जो इम्पैक्ट के बारे में बात करी थी, मैं स्टोरी के बारे में बात करी थी, लाइक यू नो, ओके, दिस इज द थिंग. बट व्हेन शी सेड ओ द ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, तो आई थिंक दैट from a non-Indian perspective or a non-resident Indian perspective, or I mean I would say a person of Indian origin, let's just put it that way, because non-resident Indian ये भी हो सकते हैं जो हमारे मोहम्मद मर्चेंट साहब की तरह, you know, every year they go back, they're constantly in touch and they really are not completely out of loop. तो उनके हिसाब से good what impacts them is the outfit, the finery and all that the stuff. The glamour, the music, yes, the chum and all that. So आपके हिसाब से वहाँ पे मतलब what impacts me? हाँ. या मैं तो अरे अभी oh my God, it's going to be 20 years for me in US soon. क्या? Yes.
So no, you actually don't count, Deepa. You go every year to India. Yeah, I go. वही मैं बोल रही हूँ. हमारा record है 20 साल से हम लोग लगातार. That's very good. And दूसरी चीज जब आप आप होश संभाल के उसके बाद यहाँ पे आए, right? Like you're not होश संभाल के. होश संभाल के. Yeah, like you've like grown up. You've seen movies in India. You know that not everything that is shown on screen is actually true. For somebody who's outside, who's completely clueless, right? वो क्या सोच रहे होंगे ऐसे वाह कैसे दिखते हीरोइंस या एंड लड़कियां मतलब लड़के मोटरसाइकिल पे आके डांस मार के बीच रास्ते में डांस करते हैं. It's very interesting you say that, Faltu Rani, because something that I vividly remember was I think I was probably around 5 and my brother was 3, or I was 6 and he was 4. And we went to India for his Mundan ceremony. And I vividly remember, and my dad is from Pathankot, so the ceremony was taking place in Pathankot. Now, by then we had already watched some Desi movies and all that. And, we land, we get to Pathankot. He's sitting in a rickshaw. He's quieter, so he's just looking around, observing everything. Then he looks at my dad and he says, "Papa, your country is very dirty." That's something we vividly remember. But then the amazing thing is that we kept going back, and he fell in love with India. He had a motivation to learn how he can read and write Hindi. I didn't pick that up. I think I was so engrossed in just the movies and the music. But and he has a very strong love affair with India. But I mean, this is how Bollywood or India impacted us. And then over the years, the more movies or music we were exposed to, that really helped us keep connected to the country. And we don't say stuff like that anymore. फालतू रानी, तुमने अभी जो पूछा ना, तो they say, I mean, there is a theory, like, how जितने साल के तुम हो, वो टाइम पे तुम कोई भी बाहर जाते हो, and you spend the equal amount of years in that country, that's when you exactly change या फिर completely ये हो जाता है कुछ. Impossible. There is some, ऐसे I have बोलते been हैं. out of the India more than I spent in India. Yeah. I still am the same Indian. Correct. I mean, it's not true for everybody. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. Hey, but it can be true for everybody, but not for me, right? I'm Altu Baba. Me too. आप दोनों यूनिक हो. In a good way. मैं जब भी अभी भी जाती हूँ. आज नहीं. Hey, I want to ask you, did you ever think that actually were the kind of people, Sapiras, who used to have the big bindi, no? I don't know, but that thought never crossed my mind. So you didn't see, what is that movie, Altu Baba, that Indiana Jones, McKenna's Gold, is it? What is Correct. that? In which they depict Indians as snake charmers. Did you see that? Now the irony that is the main thing मैं बोलने वाली थी फालतू रानी. Right. जैसे अभी विभा जी ने इतना अच्छा से explain किया, like even though they show certain things which are right and wrong, ठीक है, but majority सोच लो कि इतने सारे movies बनते हैं यार, तो कुछ तो majority सच्चाई होगी. And other people from other culture, they don't even take that. They are still stuck in that pre-independence era. Elephant and snake charmers. Yes. You have no idea. Bollywood movie में दीपा अरे देखो ना, अभी लैम्बोर्गिनी चलाते हैं हमारे लोग, हीरो लैम्बोर्गिनी चलाते हुए आता है, लेकिन इनको स्नेक चार्मर ही दिखता है. Well, let me say this. आलतू बाबा ये रेडियो डियोटिस नहीं आज, रेडियो रिपब्लिक होना चाहिए. तो यार मैं ये कहना चाहती थी, even pre-independence India, we didn't have elephants walking on the middle of the street. Exactly. Thank you. So just FYI, for those of you who are just watching us, and if your kids who are watching us, and I know a lot of you watch us, and if you are people who have never been to India, let's tell you, we never had never, unless it is a procession where the elephants are brought to the center of the street. It's not like you'd have an elephant wandering around on the streets, or for that matter, snake charmers and rubies being sitting sold here and there. Actually, Faltu Rani, it was double whammy for us, because as Indians living in Africa, when I came to this country, the questions people asked me when I first went and worked, what? How come you speak English? When did you go to school on elephants? Because I told them I was an Indian, I was raised in Africa. The type of questions that they ask you
It's like, are you living in your own bubble? I mean, seriously, you're so ignorant. I was shocked at how ignorant people were. But the beauty of all of it is, हम जो मर्जी सोचे इंडिया के बारे में, हम जो मर्जी बोले, पर कोई किसी और की मजाल नहीं होती. When I'm saying किसी और की मजाल, any non-Indian person to say anything about my country to me. I have gotten into, I'm not even going to get into this. Many things, many arguments with people about defending the country. नहीं, तुम लोग ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए क्या? नहीं, मैं इंडिया से साउथ अफ्रीका एलिफेंट पे गई बोलना चाहिए. एलिफेंट पे गई और फिर यहाँ पे जिराफ पे चढ़कर. Logically impossible. The sea water. I know. Those people don't have logic. Yeah. No, Baba, those people don't have logic to begin with. तो बाबा ऐसे ही मजाक में ही बोलना चाहिए, बोल रही हूँ मैं. कोई क्वेश्चन है पूछने का. But one thing I tell you guys, I let it go all the while. Fine. Why don't you talk about the actual theme today? Correct. Sorry. What about the impact of Bollywood? You said VIDESI suddenly we might go into serious topic. I don't know. I think the camera is being conscious to only go serious of topic. She's watching too many. You're watching too much of Pranav. What's his name? Arnab Goswami. Please, let's talk about nice fun stuff. अरे मुझे चश्मा पहनना था ना. Yeah, I also know. I mean, it has kept us together. What? Bollywood. Don't be so serious. Okay, it's I'm kept. not. You know. हाँ, Bollywood का influence अरे बताओ ना. वही मैं बोल रही हूँ. ऐसा मैं तब से लेके आने की कोशिश कर रही हूँ. I talked about Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, where I talked about 90s की बात मत करो यार. Talk about what is the thing which you imbibed. What is up? Okay, fashion. Did fashion fashion defined on Bollywood? You saw Madhuri Dixit wearing something like flirty skirt. For the longest time, I was so inspired. We would go back. I will tell one. And my mom, even till a couple of years ago, so inspired by Bollywood, Madhuri Dixit, jaise unke, she had those beautiful curls and plain sarees, curls, plain sarees. Plain sarees ka fashion tha. Plain sari was on Madhuri Dixit. Plain sari was Sridevi. And for me, I think it would be more of the lehengas and the suits and stuff like that. Oh, not the skirts and all. No. What modern dresses? No. Those were influenced by wherever we were. I was talking 90s. I don't know who else you could think of. No, 90s. You're correct, but correct. I'm correct. Okay, thank you. Our Indian outfits were inspired by Bollywood. So there was a time when. अरे Western भी मैंने. Western भी. DDLJ का जो dress था इतना hit हो गया. कौन सा? That she wears that. Jaggery type. I had that too. सब ने हमारे सारे group of cousins we bought all of them and the best part today we're talking VIDESI, VEERVAAR and our Desi person talking about impact of what happened in our life. Yes. It's okay. अरे मैं आधा विदेशी आधा विदेशी अब दीपा you're not full. You I know वो बोलते हैं ना इंडिया को मुझको इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन इंडिया को मुझसे बाहर नहीं निकाल सकते. क्या बात बोल रही थी. So today is a day when Bandhuchan, we'd like to hear from you. So Chetu, Tejas, all of you guys need to call in. We'd like to hear what is your image of India, and did you have a culture shock when you went there? And Facebook पे जो हमारे बंधुस chime in कर रहे हैं, please do call in. We'd love to hear from you as to what you have to say. 408-912-2479. एक बार और स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिएगा 4089122479. Hello Pam Pam, कौन है जी? Hi, Pam. What a party. Where's the party? Hold on. Next time तुझे भी आना पड़ेगा, ठीक है? Who are you calling party? What a party. No, certainly not you, Altu Baba. You're too quiet today. I know, right? Poor guy. Thank you, Aditi. Fine. He's like, अच्छा किया मैंने इन सबको बुला के यहाँ पे. Regrets हो रहे हैं आलतू इतने आसानी से चुप नहीं बैठेगा. वो कुछ काम कर रहा है इसीलिए चुप बैठा है. वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का. मैं देख रहा हूँ क्या क्या करोगे आप. मैं चुप रहूंगी. हाँ, ये सबसे बड़ा ये चलित how many seconds दीपा. अब बेचारी को चुप मत कर रहा हूँ. बोलो. हाँ बोलो. देखो विभा ने बोल दिया. Aditi is calling. Aditi. नहीं बोलिए ना रेवा जी. Hey, what's Aditi? What happened? Why is Deepa agree with you today? What happened? देखो. Why she agree? What happened? I know something. Deepa last time remember Aditi didn't support her. ऐसा कुछ नहीं है Aditi.
देखो मुझसे बुलवाया ही finally. I wanted to keep quiet. So why? Because अच्छा अदिति बोलो, तुम बोलो. Because Aditi called, you want to keep quiet, is it? हाँ, let's see what Aditi has to say about Bollywood and the NRIs. हाँ बोलो क्या बोलना है? I mean, I totally relate to this topic. It's totally something that I've lived. So yeah, I think the only reason why I speak little tuta-puta Hindi is because of Bollywood. No other reason. Oh really? In spite of being Shetty? हैं? In spite of being Shetty और Rohit हिंदी का क्या connection? हाँ, क्या Rohit connection? Shetty makes movies, no? oh that okay Yeah, but Rohit Shetty's movies always. Bad joke, also. No, he doesn't do justice for proper South Indian language. He's a pseudo. yeah correct Well, the thing. वो क्या बकवास क्या dictionary बकवास dictionary? Who said बकवास yeah word? yeah हाँ. and it's not all पुला नाक पुका पुला हाँ தமிழ் தமிழ் தெரியாதா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுமா horrible yeah so but anyway अरे No, इस but रोहित शेट्टी I का was so कंप्लेंट इसको enjoying what बोले you're तो sharing, Vibha, because it's so true. Like my early recollections of Hindi and India are completely associated to Bollywood, and it's all those old songs that my father used to play on tape, the days of tape, and I remember removing the tape and fixing it, and we had my dad had all those old Hindi song cassettes. Yeah, it was just when you were saying all that, I recollected all those days, and that's so true. Like our lives were completely. India was completely a definition of what Bollywood showed, and of course we would go home every year, but that's just summer vacation, right? 2 months of summer vacation, and it's only at Nani ka ghar or Dadi ka ghar, and you're only seeing that, yeah you know, that city in that. Ditto. Yeah. That's true. Actually, language 100% I give it to Hindi industry, film industry. what you give in language what हिंदी जो हम मुझे जैसे लोग। मतलब देखो उस जमाने में देखो इवन साउथ देयर वाज ओनली वन चैनल दूरदर्शन उसके बाद जी आया कन्नड़ा वगैरह कुछ नहीं आता था Star Plus हाँ now wait whenever somebody's language I feel like Are V and all came much later. नहीं जी वाज द फर्स्ट वन Z, I think, much later. You're right. जी वाज द No, फर्st it came वन much later. I remember we used to get so movies was Star. one way, and then there was something called News Track. I remember used to News come and Track. did that. I remember that. there should be something called Star and Star तार बाद में आया जी में वो तारा शो I आता था remember ना। only one thing ये तो FTV सब आप and MTV 90s की बात कर रहे हो. FTV The क्या? later 90s. I'm talking about 80s. हाँ इसमें I You're remember right, you're right. hey but I only remember FTV and MTV Fashion TV and Music TV FTV मैंने कभी नहीं देखा. You didn't see it? FTV. Fashion MTV नहीं देखा MTV देख FTV. Oh my What god is MTV तो Music TV. Channel V you know V like Aditi said don't remember. language even now my kids they understand completely Hindi thanks to me मैं जबरदस्ती उन लोगों को Bollywood मूवी दिखाती हूँ Important, very important. Yeah. imagine how much of a trauma they're going through ऐसा कुछ नहीं है They love it, man. They love watching But it's Indian movies. interesting now we restrict content, now Hindi movie content, but back then we watched everything. Yes, we watched everything. look how it turned out Everything. In fact, you were asking me about the first movie. I remember my first movie in the theater was Imagine Jimma Chumma De De. Oh, my yes. Yeah, we used still to, my favorite movie we used to dance to that too. excuse me हमारे पापा के साथ हम लोग वो ना कहा सेकंड रो वी सॉ वी वेंट फर्स्ट एवरी टाइम अमिताभ बच्चन मूवी बोले तो माय डैड वुड गेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो wow every single time and we would go like we'd go there and we would Innocent, yeah, very innocent times. All these movies never impacted you. Such a you didn't see Tarzan No. innocent movie Favorite movie. innocent movie अच्छा. Now I will definitely not watch it. अब आपने innocent बोल दिया ना. Hey. my Tarzan thank you very much Timmy Katkar and what's the other guy's name Timmy Katkar. what is it Himanshu something the first guy to go bare what chested his name is the first guy to go bare chested in innocent Hemant Birje Hemant Birje. Who's that? you I'll will check the hero of poster out. Tarzan okay yeah, no, she has seen she's ठीक है. just I have not watched Tarzan. No, I'll tell you. Aditi. Okay. So I want to tell you. So really, the impression that a lot of children of Indian origin had of India was, or people who are raised outside of India, generally had the impression that you're Mowgli
or the Apu from The Simpsons. No, I'm serious. Do you talk like this? Do you shake your head like this? Yeah. Is this how you talk? Yeah, the Mowgli smell like curry? or Simpsons. That was nonsense. the no. I honestly am telling you, there are kids who believe that everybody who and it used to really annoy me. हमारा एक Thank Gosh It's Fresh करके एक show होता था, and no Indian speaks with that accent. Okay, they will try to put on that is the way we talk. That is, I was like, no, nobody talks But that like is that. popularized by the media here. Now, all the Indian representation of the media here is with that stereotypic accent. So the kids will obviously, like, I don't blame them. So that is why I'm saying that the people like the Mindy Cullings of the world and the Russell Crowes of the world need to understand that their understanding and perception of India that they get from Bollywood is not real. Why Russell नहीं फालतू नहीं, वो लोग बॉलीवुड नहीं देखते. Russell Peters, there you go. No, it's very difficult for people to understand and appreciate the diversity in India. I mean, my own Indian friends have told me that you speak so good English. And I'm like, look, it's not that. It's my exposure is different. Yeah. Different people from different parts of India speak in different English. India itself is so diverse, yeah. Correct. But we don't grasp it. Forget about people who don't live in India, right? Right. Foreign ka to alag hi baat hai. They have like some orientalistic view of, as you said, snake charmers and all that nonsense. But we अरे ourselves don't उनकी बात क्यों appreciate करेंगे, हम that, लोग अपनी बात See, करेंगे. I'll tell you what, we have done multiple shows for the past so many years, okay, 12 years or 12 plus years, right? And we realized one thing, that Indian cinema has not done justice many a times depicting the social, economic or social status of, many cases, like, reality to real life has always the gap over there. How about depicting the NRIs life? Do you think they've got it right in any of the movies? What do you think? Yeah, any movie. Have मेरे पास एक have movie they, है. wow, this is exactly like me. Have you got is there anything which rings truth to you? Aditi? Any I movie? don't know of any movie that depicts. I mean, if you want, I will obviously then quote like some art movies that have gone close to reality of what living in India is. But not in India. commercial cinema stuff. Not Yeah, living in yeah. India. Not नहीं, we are talking about NRIs NRI movies, portrayal, यार. Living- Oh, NRI movies. Yeah. I mean, That would be a Okay, let me see. theme based on Even NRI. Swadesh was not relatable because it was such a minority ka example. Which one? No, But still, it was which very one? good, yaar. Swadesh. Swadesh It's a never good showed. movie, I don't deny. Wait, but hold do on. you think he Let me- represents every Let me classify. NRI? No. Swadesh will not come under the category. Swadesh is him actually coming and living in India. Yeah. But not somebody living in America or whatever it is. Because I think, okay, let me tell you. For instance, Karan Johar movies, most of them are set outside of India. Right. Is there any truth to it? No. I don't think so. They, How Bollywood about- really needs to work on. अरे think नहीं, वो that सिर्फ great visit के लिए movies, I जाता है think आल्तो that बाबा. kind of- He is American citizen. वो इंडिया विजिट करने के लिए जाता है. It's a very good movie. Deepa, again, you're missing the point. I'm saying depicting life of an NRI in They need- outside Yeah, India. I don't More think movies about people like Altu Baba, us, what you are kids saying, there are good and movies, grew up but watching there is like one or two movies that I would say there's one movie of Om Puri, but it's more of Indian or Pakistani families in Britain that did a fairly good job, but still they're all very stereotypical. Yeah. Are you But I'll talking tell you- like movies I like want to Bend It say- Like Beckham? Yeah. नहीं, you are completely changing the topic. The one आल्तो you're बाबा. talking about, No, Aditi, Deepa, I've I am watched not. that That is movie. the topic That is the today. theme That is the today. topic of East and West, Videsi yeah, VEERVAAR. See, East thing West. is, I know the how one. India- It's an older movie based in Viva, hold on 70s. second. Sorry, Altu Baba. So the way Indian cinema has portrayed itself as in people living in India is one thing, okay? What we are talking about is Videsis, how Indian cinema portrays Videsis. Right? Either they portray them as jokers coming in and fighting with the Indian Desi dude, Munda, Like- or a person living in Videsh, they show him like, oh, very affluent community, blah, blah, blah. But That's will the man. still want to go and ye mera India, I love my my India, India, that yeah. kind of. Well, I really loved the movie Namaste London actually. Namaste, They London. have good. shown That was a- very Wait, good. Yes. you're saying very good, but is it true? Does that really happen in Namaste London situation will happen? It does. It might have What? During happened. arranged Where? marriage situation. It might Where have the happened and parents yes, force friend the circle girl- में हुआ है where अभी. they force the girl to go to नहीं, India and marry a हाँ, guy. हाँ, अभी हुआ and है. she Yes, doesn't want it to. did happens. happen in our You're friend right. circle. That is Okay. a good. Yeah. That is a And true अभी भी हो portrait. रहा है. Like I have seen. I will not tell the names. Uh-huh.
in friend circle जो मेरे जान पहचान वाले बे एरिया में Okay. the marriages like that have happened very recently हुआ एक. I'll tell you about one particular movie which actually talks very well about this. Okay, and I think to a certain level they've caught the actual middle class people suffering in the out of India, right? Have you got to see this movie called Aab Laut Chale? Yes. That's a good one with Aishwarya Rai and Akshay Khanna. It didn't become a good hit. It was not a very. But that is a somewhat true portrayal. Yes. So they talk about the immigration thing and all those stuff. What challenges right? they face. Yeah. Oh, I've not seen that. That's a good movie. Yeah. नहीं आलतू बाबा you are right. एक पहलू को दिखाया गया है. That doesn't mean ये जो नमस्ते लंदन में भी दिखाया है ना. I don't that know. is one more पहलू. To me, when I see Namaste London, I look at it as aristocratic life, which I can't imagine. I'm not able to find anybody. 12 years, nobody caught him say, I have a house like aristocratic नहीं दिखाया. वो they were just simple family रहती है. Yeah, they were not very. She married into the white. Yeah, the white guy is rich दिखाया है. She's very like fascinated by his wealth. UK life. She doesn't want to go to India. That is very much relevant to the current community. बहुत सारे बच्चे जो नहीं जाना चाहते. Okay, Deepa. Yeah. Okay. Deepa, So I think. Smile, Deepa. It's okay, Deepa. It's fine. It's a matter of talking to Deepa. Aditi, तुमने देखा है नमस्ते लंदन? देखा है, I don't know. I never related to all those movies, but then to be fair, picture बनाते हैं. Why would they make picture about normal people? It's not interesting. They would make a movie about something that is exceptional or. But it's offensive, Aditi, when they make movies like Three Idiots and that guy, that what is Chatur? That guy, they show Chatur as if he's like some fool from he's from outside India. Hey, That's also not fair. Vibha. My husband makes fun of me. He's like, all you Indians from outside India are like Chaturs. I was like, come on. Hold on. Okay, now we don't want to go. That's what I'm saying. A little bit TMI for us, but the point is, yeah. There's people on Facebook also commenting on there. Faltoni is supposed to monitor, she's not monitoring it. Varsha ji says, glamorized version of NRI in movies. Where is that? It's pretty much what she sees in Bollywood, she says. So it's more of glamorized. I agree with what Varsha ji is saying there. Varsha Soni ji on Facebook. Thank you so much for that comment of that. Meenakshi saying, I'm going to be talking about that movie only. So, Father, you're not able to see the thing? I think it it's doesn't show up on my feed. Hey guys, I'll hang up. I think there are folks who want to call it. Yes, thank you so much for calling in. Thank you, Aditi. And of course, Banijan, अगर आप ही यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, स्टूडियो का नंबर है 408-912-2479. Hello, welcome. कौन है जी? Pam Pam? Today's Cinco de Mayo, and I'm going to count in Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's pretty awesome, Jena. Oh my God, that's awesome. Yeah. Let's party today. Let's party. Exactly. The party's on Jena. Te amo, Jena, and un pollo loco. Un pollo loco. I don't know what it El is. pollo loco. Un pollo loco. Crazy chicken, right? Yeah, something like that. Yeah, loco polo is crazy chicken. Okay, fine. Isn't that Whatever. a But thank you franchise? so much, Jena, Thanks for calling us. Jena. Yeah, happy Cinco de Mayo. guys. Thank Everybody. you. Oh, Sunday से आते Look at her. Blushing. तो एक मिनट में इनसे बात करने की जरूरत है. ये ड्रेस है कि चेहरा है क्या है? तो कैसे हैं दोनों आप? पिंक हो गया. हाँ, exactly. अच्छा, कैसे हैं आप, करुण जी? I'm Jena. Yes. Why is her voice so masculine? The DNA matches. Yeah. So करुण जी, आपसे पूछना है कि आपका ये जो चतुर वाला इम्प्रेशन है NRI लोगों का, क्या है ये? तो ये कहाँ से आया आपको? चतुर वाला कौन सा चतुर वाला? वो 3 इडियट्स वाला चतुर की बात कर रहे हो आप? हाँ. मालूम नहीं, हमें बताया गया था ऐसा. I never had that. Thank you. I know that. That's what. So sweet of you. अभी विभा एक गाना गाएगी आपके लिए डर मूवी से. क्या? तुम्हें मेरा करुण? हाँ. तुम्हें मेरा करुण जीप्स. Oh my God. तो आपसे पूछा जाए, आप तो होम ग्रोन अखंड भारतीय देसी हो. घर की मूली बोल रहे हो. एंड आपने एक विदेशी छोकरी से शादी की. तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या was she very filmy? Like, did her expectations of life, were they kind of filmy?
did you notice that? Because she says she was very They were influenced. very filmy, yes. Yeah. They were very filmy. She would expect me to come home on time and, you know, like, you know, Cook bring her food. gifts every day. And, you know, just like, and take her out every day. Take her out 3 every movies day. a week. Wow, kind of 3 thing. a week? Wow, that's overkill. 3-4 dinners every week. अरे This was तारीफ the करने first के लिए फोन month किया of या the मेरी marriage. बेइज्जती? एक मिनट तो ये हाँ, क्योंकि वो देखो मूवीज में क्या दिखाते हैं, अरे ये क्या हुआ, एंड यू नो व्हेन दे आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, कैंडल लाइट डिनर्स, शॉपिंग, लेजी शॉपिंग. हाँ, शॉपिंग, मूवीज जाना, एंड यू नो जैसे फिल्मों में होता है हूबहू टाइप्स, Suddenly गाना I mean, that was her expectation, but that is still the expectation after so many years. What? It never died down. It never died down. It was still the same. अरे why not? ऐसा ही Hello, excuse me, don't support her because she's next to you. ऐसा कुछ नहीं है. अरे जिंदगी में मतलब ये होनी चाहिए, जान होनी चाहिए. बिल्कुल. आपको मालूम है, आपको मालूम रंग है, भरने चाहिए. दीपा जी 1 मिनट रुको, before you talk all these things, बाहर गोपाल बैठा है. तो करुण, don't worry, आपके support वरना बहुत है. जिंदगी But I बेरंग हो must जाएगी. say, there is a difference between India grown and, you know, raised outside. There is, you don't notice it, but there are some subtle differences that you would find out, you know, those are very subtle things. I understand. On the surface, you wouldn't know it. I agree, because that's the part of the culture you grow up in, right? And the jokes we find funny, some of those guys is abroad don't find funny, and you know that connection sometimes it takes, you know, so that there are differences. But at Definitely. the same time, there's also this aspect, right? जहाँ पे हमारे अदिति जी ने लिखा था Facebook पे कि we freeze time when we leave India. तो हमारे जो like you know like maybe Vibha's parents when they left, जो उनके संस्कार हैं वो ही exactly संस्कार बच्चों को देते हैं. तो you find a lot more of the Indian culture and tradition ingrained in non-resident Indians as opposed to the Indians growing up in India. Yes. You know. That is true. Yes. The flip side That is is true. But however, if you have the education from here, let's say you came very early on, right? I think you're more in the confused category, you know. Let's say your parents try to give you the Indian culture, right? And then you go to the school and you have a different culture input to you all the time. And I think you're bound to be confused because the cultures are very different inherently. Correct. So there is, I see, like, you know, there should be a conscious coaching effort by the parents here to understand that there is definitely going to be confusion. Correct. And there should be like a, you know, institutionalized, we should institutionalize it, that, you know, there should be counselors, you know, for that thing. I think it's something we're missing in the community. That's absolutely true. That's so true. That's why we have shows like this. फालतू रानी, मुझे एक याद आ गया जब मेरे बच्चे hold on पंच dialogue है. Okay, sorry, बताओ. I would like you guys to have fun. This was more serious note. So you know, please continue with the show, and it was very fun. Thank you. Because thank you, Karun. And Karun said we record to have counseling and all stuff. Right? इसलिए we have shows like this बोला. Exactly. जहाँ पे आप आते हो, जोर से बोलते हो, बाकी लोगों को बोलते हो, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ. अरे जान है दीपा शो की. जो क्या जान है. जाना है. जाना शो से बोल रही है. अच्छा, मैं बोलने वाली थी कि जब like बच्चे छोटे रहते हैं, like they get sick little more often, right? Like so when I went to the doctor and like in India for something, and they said like the only way to beat this is visit more often. And that holds true even for culture. There is no other way. जितना भी movie दिखाओ, कितना भी दिखाओ, but as much as possible you have to visit. Like practical theory में जो difference है ना, वो difference इधर आ जाता है. Visiting India more often is the only way to cultivate and also normalize the equation. तब shock नहीं होगा बच्चों को, and like you know इतने आराम से they blend in, they gel everywhere. So it becomes it makes them more stronger and also character development. This part of the program was brought to you by VIDESI Bhakts. नहीं, देसी भक्त. विदेशी भक्त. He's talking about. आप विदेशी हो ना?
आप देसी तो नहीं नहीं मतलब फिर मैं भी देसी हूँ ये यार परदेसी है, वहाँ से निकल के हाँ ना। परदेसी है हाँ Yeah. No, but it's very important, Deepa, especially in a culture I think as strong as American culture. एक मिनट ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, thank you. Let us ask you one thing. ये आपका third time Yes. talking about American culture, strong culture. As Please. strong as क्या strong है It is. No, let me tell you why. Let me tell you why. Because I have grown up in Africa, right? Over there, even though the African culture is strong, most of the time, Desis are not that influenced by that local culture. So what tends to happen in those countries, and I'm talking about not just Africa, but the Middle East, you will notice that Desis from the Middle East and Desis who have grown up in Africa are very similar. Because unka kya hota hai, the parents are like what Faltu Rani said, parents are still very influenced by India. They are still stuck in the time they were at when they left India. And those values, transcend to their children. In those countries, people mingle the way they would mingle in India. Whereas over here, I think it is much more difficult for Desi children growing up in America versus Desi children growing up in Africa or even the Middle East, because the cultures there are not as powerful, or our kids as different are not as influenced by African culture or let's say Middle Eastern culture than they are by American culture. I remembered my middle school days, Fatwani. Why? We used to have a subject called social studies. You remember my teacher asked, how was the war of Panipat? And I wrote the answers, fought very well. Yeah, and they said, what was that other thing? Oh, that is 10 Yeah. pages, 10 Exactly. pages, right? And also wrote 10 pages about the surrounding the war, the fact that how many people, all the soldiers fought very bravely. Yeah. The Senapatis fought What very was the bravely. point? Yeah, Huh? yeah. So point was Sainik missing. 1, Sainik 2, So Sainik 3. your connection to the point of saying, why do you call American culture strong? No, she explained it. No, I will Yeah, explain you it. understood it, right? How? Please That's why explain. I wish I teach like you. Yeah. Please explain how What it's strong. she's saying is like, I think geography comes to place. Hey, I mean, hey, don't confuse now. We talked about culture, anthropologically नहीं, तो speaking. बाबा, like she is saying like culture there, Middle Eastern देखो, very much similar and it's easy to No. She talked No. about why American culture is strong. She was saying. Altu Baba, the whole world, way too India different. Samet, is strongly influenced by America Influence. and American culture. Well, I will. Foreign correct love, you. I beg to love. differ. I beg to नहीं differ. फालतू नहीं वो सही है इंडिया में ऐसे ही लोग I don't know, I've seen like family members in आपने India बोला strongly influenced एक by मिनट। Miley और मूवी Cyrus में and all और that. सीरियल में हमेशा अमेरिका Okay, अमेरिका अच्छा एक मिनट थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप you're very close to the mic, guys. It spikes sometimes. Yeah. So you got to turn towards the mic and talk, Vibaji. आपको वरना आवाज नहीं आ रहा है. So the thing is, your statement was American culture is strong. Okay, when you talk about some culture being strong, right? The culture should be strong, not the influence of culture. Why is American culture, according to you, strong? Is my question to you. Which How you said many, yourself. even people from the villages of India know who Michael Jackson is. That's the type of That is point not I'm trying American to make. culture. That is pop culture. Pop Exactly, culture. yeah. or That is pop culture. So that right, way, if you right. look at it, Balisagu is Correct. also equally popular all over the world. Yeah. And Stereo Nation, God bless his soul, he actually passed away. Passed away, yeah. So everybody in the world Right. knows Stereo Yes, Nation. right. So that's pop culture. We're not talking about, you're talking about American culture versus Indian culture or Middle Right. Eastern culture. Right. वो अलग है. Right. क्योंकि when you talk, I beg to differ when you say American culture. Yes, in a way, Right. I would say that America is what they like to call it melting pot, but Right. I don't like to call it melting pot purely because of the fact that जो भी यहाँ पे आता है, that is one fundamental right in this country that everybody gets to preserve their own heritage, take pride in whatever their identity is, and nobody is supposed to hate upon you. Supposed to in Yeah, quotes, absolutely. because आज भी आप आपकी जो identity है, it is respected, supposed to be respected. It's enshrined in our constitution. Everybody has that liberty to pursue pursuit of happiness जो है, life, liberty and the pursuit of happiness जो है, वो मैं मानती हूँ, but that's there even in India. Don't you think? Yeah. नहीं इतना नहीं है फालतू रानी I agree what you are saying लेकिन क्या है ना इंडिया में मतलब फॉरेन का माल यानी that Yes. I feel bad sometimes. No, believe me, I'll believe come me. back. I'll come back to that part of it Domino's because pizza. I think hold on. there's a bandhu. There's a bandhu waiting for Sure, calls. sure, Hi, Namaskar. Welcome to our VIDESI VEERVAAR. Who's this? Hello.
Hi, PAMPAM. Meenakshi, sorry about that. ये विदेशी वीरवार like turns out to be विदेशी वेगवार. दीपा जी ना एकदम चाकू लेके आगे मेरे पीछे. और तो विपा जी तो of course विपा जी तो रेवा जी बन गए. तो वीरवार बन गया. यहाँ पे वीरवार नहीं. Sorry. Good one. Always. कभी कमोल नहीं किया. कभी कमोल. हाँ बोलिए. हाँ मीनाक्षी जी good. Voice of reason आ गई हमारी. Yes. मुझे नहीं पता कि शांति की मेरा मूर्ति. ऑथेंटिक रिव्यू होगा ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे अभी 5 साल हुए हैं लगभग यहाँ आए हुए. तो मैं तो बाय हार्ट देसी हूँ और देसी रहने वाली हूँ. तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई लाइक आई कैन नॉट पुट ऑथेंटिक व्यूज अबाउट दिस टॉपिक. तो इसलिए आई वाज hesitate to call कि मैं करूँ भी या ना करूँ. No, okay, let's do this. Let's reposition the thing to you, okay? So आप यहाँ पे 7 साल से हैं यहाँ पे, correct? तो आप you have been previewed to a lot of things over here, right? To certain level, correct? हाँ, जो आपने जो देखा यहाँ पे जो family से आपकी भी next generation भी है, right? You have a first generation here thing, right? Even in their perspective, what do you think? Do they see India through the lenses of Bollywood, that is the Indian cinema industry, or do they see through lenses of you, like how Deepa keeps instilling that particular culture in them, Vibha keeps instilling the culture in her kids? Do you do that? Who does the transfer of knowledge or transfer of culture to the child, in your case? Basically, मैं अगर अपने बेटे के लिए बात करूँ तो transfer of culture through me और my husband के ही through हो रहा है. Bollywood का I would say 10 or 15% contribution है पूरे प्रोसेस में अभी तक तो. Okay, good. That's good, right? I'm glad कि एटलीस्ट वो मूवीज बैठ के देखता है, हिंदी मूवीज हमारे साथ, और उसको समझ में आती है, और देन एंड देयर वो क्रिटिकली रिव्यू भी या रिमार्क्स भी करता है. हाउ कैन पीपल बिहेव लाइक दिस. तो आई लाइक इतनी क्रिटिकली रिव्यू करता है चीजों को. और वो मतलब कंपेयर करके देखता है कि वो यहाँ रह रहा है और वहाँ कैसे लोग कर रहे हैं. तो कभी कभी वो क्रिटिकल रिमार्क्स करता है. That's very important. Situation. See, that's exactly why today's topic was like, you know, how are people portrayed? Now, what is the thing as a Videsi? We are actually, if you look at it, हम लोग हाँ 2 मिनट पहले फादर ने बताया कि Deepa is not Videshi, is Pardesi. So we are Pardesis, yes, but we are Videsis, right? End of the day, we are Desis. Pardesi तो है. तो मैं क्या बोल रहा था कि आज हमारी Indian cinema, I still feel have not done justice in terms of depicting the right way. Yes. How a life of particular. देखो अभी just for somebody to I still am yet to find a movie which I can say अरे हाँ यार this talks about the life I have seen. I have seen over here. कहाँ दिखाते मंदिरों के बारे में कहाँ दिखाते यहाँ पे कितना ड्रामा होता है मंदिर गुरुद्वारा के ड्रामा कितना होता है right that happens and so talk about drama Indian wherever Indian community goes this drama right. I found one movie right. Did you watch it Faltu Rani? उसमें दिखाया गया है NRIs movies. NRI ड्रामा दिखाता है. हाँ ड्रामा दिखाया. They have shown the India sweets and spices. You should watch it. So there's one movie that I know you guys are gonna go, what Faltu Rani. What Faltu Rani. No, but my name I knew it. My name is Khan. What Faltu Rani. Yeah, that was I think it's somewhat accurate. It depicts pretty accurately the struggles of somebody who's raised here or has lived here, and at the same time also is. There's that intersectionality, right? You're Muslim, you're also neurodiverse, and you're an immigrant. You're not really in this country. So that I think I felt that movie depicted pretty accurately what was the situation. And if you want to take a tongue-in-cheek kind of look at, there's a movie which I don't know if you've watched it, Nagesh Kukunur's movie called Bollywood Calling. And Hyderabad Blues. Hyderabad Blues. These two movies are really, really funny. It's an NRI making that movie from the NRI perspective. Nice. It is. It talks about the struggles of an NRI. At the same time, the clash hota hai, culture clash hota hai, between somebody who's been here for like let's say 15-20 years and goes back and then falls in love with an authentic Desi girl. And then what happens and how he has frozen his sanskar here, and the way how she is. What is that, man? What are you doing? Why? It's a pretty interesting movie. You should watch that. I liked both of those. I liked Hyderabad Blues. In fact, there's a lot of
realism to that particular movie. It's a good movie. I mean, Yeah, watch Namaste London also, Faltu Rani. हाँ, मैं एक मूवी का नाम लेना चाहूंगी. दो इट्स लाइक थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में रियलिटी दिखाई गई है, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर इट इज मोर रिलेवेंट टू टॉपिक और नो. इंग्लिश मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है, मैं चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ. कैसे उसके बच्चे उसको फील एम्बेरेस्ड अबाउट कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट वो जब यहाँ न्यूयॉर्क में आती है अपनी नीस की मैरिज के लिए, हाउ सपोर्टिव हर नीस वाज. तो इट इज एंटायरली डिपिक्शन ऑफ कल्चर. तो एकदम न्यूयॉर्क में कैसे वो 3 लाइक लेडीज रह रही है विदाउट मेल, एकदम इंटैक्ट फैमिली एंड वेरी सपोर्टिव टू ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो मुझे ये छोटा सा डिपिक्शन है, बहुत माइनर सा, बट आई लाइक दैट डिपिक्शन इन दैट मूवी. Correct. In fact, Vishal ji is saying some Punjabi movies actually show how people in India really want to come to the US or Canada. And what? Oh yes, that I've watched a movie is all about that. Oh really? Yeah. Okay. Yes. So that movie is about Akshay Khanna, जो शायद UK या इंग्लैंड या लंदन कहाँ आता है एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर, बहुत साल पहले मैंने देखी थी. तो उसका ड्रीम होता है कि यहाँ पर आकर बस जाए. तो वो क्या करता है, सिटीजन लड़की के पीछे दैट सुमन रंगनाथन है हीरोइन जो प्ले कर रही है वो रोल, उसको फंसाने में लग जाता है. उसके साथ ही उसका कुछ जैसे इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिसमें प्रेम चोपड़ा है और 2-4 लोग, सतीश कौशिक है, ये सब हैं जो वो स्ट्रगल डिपिक्ट करते हैं कि लाइफ इतना इजी नहीं है, यहाँ पर कैसे रहना पड़ता है. तो फिर लगता है कि नहीं तुम ये गधों वाली जिंदगी जियो, मैं तो बढ़िया एक लड़की से शादी करूंगा, यहाँ का सिटीजन बनूंगा और आराम से रहूंगा. इस तरह का डिपिक्शन इस मूवी में बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है. एक और मूवी मुझे याद है अभी जो मीनाक्षी ने बोला उसके बाद, अल्तो बाबा. आई थिंक you will like this movie and I hope one of you watched it. Patiala House. Oh yeah. Hey, but I was going to say Patiala House when he said Namaste London, because see the families that you're talking about are the well-to-do, well-settled families जो बहुत सालों से वहाँ पे रहे हैं. I don't believe that that's actually true of the middle class NRIs. ऐसा नहीं दिखा है उसमें. वही तो मैं बोल रही हूँ. Even नमस्ते लंदन में भी he is not rich guy. I don't know. No, where you got I that. think Namaste Both of them. Namaste London is different thing. Is not. Yeah. Namaste London is a different thing totally. But Patel House actually is about a middle class family. They're supposed to be based on real life. They struggle. He is trying to get into cricket in London, which is very difficult to get into that Don't place. they have बहुत अच्छा दिखा है. No, that's the difference. आप बस songs देखते हो, you've seen the songs. You should watch a movie. Then there you is can. a little bit of Goli-panti in that because they show big parties. Only for शादी दिखाते. शादी तो पंजाबी लोग. इधर भी ऐसा ही होता है. शादी में सब पार्टी करते हैं. समाज के It's बाकी not. पंजाबी बैठी है. अरे मैं वही बोल रही हूँ, शादी में तो सब लोग पार्टी करते हैं, लेकिन लाइक इतना अच्छे से दिखाया है. लेकिन वन लेडी उसकी कोई अक्षय कुमार की कोई सिस्टर, शी वांट्स टू डू सम कोर्स, लेकिन घर में वो पुराने कायलात वाले उसको नहीं करने देते. दे हैव शोन इट वेरी नाइस. पंजाबी नो Vipa's face changed. What? I was smiling. I liked that movie. Yeah. It is a very good save Vipa. अरे मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं. Vipa, good save. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो. You know why Vipa's face changed? Why? पटियाला पेग लगा के नाची है. What is the connection with you? What is the connection with Sharabi made impact your life now, Patiala and all? Patiala peg, it's not my fault if they make songs like that. Not songs. मैंने तो लाइफ में कभी चढ़ाई भी नहीं. Okay? क्या चढ़ाई? पटियाला पेग. ऐसे मत बोलो यार, क्या मतलब चढ़ाई मतलब क्या? But anyway, Meenakshi ji, thank you so much. देखा whenever Meenakshi calls, so nice. Nice. और उसमें एक और एंगल भी है. अनुष्का इज मिक्स्ड, मतलब उसके पापा यूके के रहते हैं, मम्मी है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते. ऐसे लाइक दे हैव शोन ऑल काइंड्स ऑफ एंगल्स. What's the point? In one movie. And what's the point? What's the point? But tell me seriously. अनुष्का की शादी हो गई ना? अरे तो मेरे को क्या मतलब है उसमें? Bollywood छोड़ दो. needs to step up and find a girl for me. That too. But do like a realistic portrayal of NRIs. No, and also जो वो दिखाते हैं पिक्चरों में, please watch out, because a lot of our kids, I was just reminded of a kid who, I mean, of course he's a young man now, he's
probably a junior in high school. So he was actually saying, he was telling his mom he watched some Telugu movie, Kabir Singh, actually the Telugu Arjun Reddy, and he told his mom, Bad movie. He just said, do you realize? I mean, he's like, people actually watch this kind of movies. I mean, he's been watching a lot of Telugu movies. They watch a lot, 100% they watch, and he says, okay, this is actually stalking. You realize that, right? This particular song this is actually sexual assault. You cannot actually touch a woman like that. You can't do that. And he actually says that kids here grow up and they're like, and this is normalized through cinema. So they think that the people in India are all perverts. Yeah, that's First of all, movie फालतू रानी वो मूवी किड देखने लायक नहीं था. His parents, it's not kid friendly. 17-year-old. No, they have given the certification and all. ऐसा नहीं, like so I choose what to show, what not to show my kids. And you also should do that. I say you cannot do. उससे बदतर मूवी इधर भी रहते हैं. ऐसा नहीं बोल. Bridgerton. No, Bridgerton नहीं, मतलब इधर के series and all. Indian Spices. Very. No, that's a movie. Oh, Sweets and Spices. That's a good movie. No, I'm saying even your Salman Khan songs. Dinky Chika, or for that matter, Akshay Kumar songs. Shahid Kapoor songs. Shahid Kapoor songs. What happened? Suddenly, Gandhi Baat. All these kind of songs. It's like, there's glorifying of stalking, glorifying of मैं तेरे अगल बगल में you guys is okay. No, it's not okay. I'm sorry. Like conclusion ये है कि impact है Bollywood movies का, लेकिन आप अपने बच्चों को साथ में ये भी बताइए कि be mindful, जो भी दिखाया जा रहा है that is not the true depiction of Indian culture. तो थोड़ा सच भी करा हुआ है movies में. हर कोई लोग ऐसे नहीं रहते हैं. अगर वो पूरा lavish life दिखा रखी है तो इंडिया में सारे लोग lavish life नहीं जी रहे हैं. और कुछ movies ऐसे हैं कि बिल्कुल किसी एक पुअर की स्ट्रगल दिखा रखी है तो पूरी कंट्री भी पुअर नहीं है. So they have to कहीं और से भी एक्वायर करनी पड़ेगी knowledge other than Bollywood movies. Correct. You cannot entirely rely on Bollywood movies कि उससे आप Indian culture अपने बच्चों को सिखा सको. Correct. Absolutely. And thank you so much, Meenakshi ji, कि आपने कॉल किया. It was very, very nice to hear from you. And thank you so much. हमारी तरफ से आप करण जौहर और जो भी वहाँ पे बाकी के फिल्म आदित्य चोपड़ा सभी से बता दीजिएगा कि अच्छे मूवीज बनाने हो तो टैलेंट यहाँ पे बेरे में कूट के भरा है. रेडियो डी हॉलीज. Exactly, yeah. राइट. हम लोग बना देंगे उनके लिए. बात मतलब कूट कर देंगे. हमारा बात नहीं माने तो दीपक को भेज देंगे कूट के समझा देगी. Thank you, Meenakshi. Thank you so much. Have a good one. Bye guys. You too. Bye. मजा आ गया दीपा जी. क्या सही में क्या निकलना है आपको? गुस्से में आ गए? नहीं. क्या हुआ? उनको वो सरड़ भवन का बड़ा वेट कर रहा है. ऐसे तो बहुत सारे कॉलर्स है वेटिंग दीपा जी. अगर आपको लगता है तो वी डोंट मिल. अरे ले लो. नहीं आप कौन है? नहीं चलो निकलना. आपने एक कान से निकाल दिया. अरे तो जल्दी ले लो फोन. वो एक और लाइन पे आना है क्योंकि वो टिक 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 वाला लाइन पे आ रहा है अभी. तो जो कॉल कर रहे हैं प्लीज करते रहिए. 4089122479. विशाल जी पते की बात बोल रहे हैं. आजकल कोई इंडियन कल्चर के बारे में कोई मूवी बनती ही नहीं है. फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली मूवीज बनती नहीं है. सलमान खान का बना ना कौन सा रे अंतिम. वो फैमिली के साथ कैसे बैठ के देखेगा? सलमान खान की मूवी जो सूरज बरजाते की मूवी है वो सारे फैमिली मूवीज है. हम आपके हैं कौन एंड हम साथ है. जर्सी देखो. मैंने प्यार किया. आपने देख ली? I've heard it's good. DDLJ. It can be watched with the family. जर्सी रीमेक ऑफ अ Tamil movie, so Telugu movie, so. लेकिन आजकल नहीं बन रहे हैं दीपा. I don't know. I don't think there's any family friend. I mean, at one time we used to have socially relevant family movies. Hello, PAMPAM, कौन है जी? मोहम्मद मर्चेंट. मर्चेंट साहब कैसे हैं? यार अल्लाह का बड़ा करम है. मैं भूल गया सैटरडे को प्रोग्राम है क्या? मालूम नहीं मेरे को. है क्या? I think है. रेवा जी बोलिए है. तो वो आपको पिकअप कर लेगी सर. वो पिकअप कर लेंगे आपको. मैं कर लूंगी. रेवा जी पिकअप करेंगी. आप जो बोले सर. दीपा जी तो नहीं आएंगी तो
दीपा क्यों नहीं आ रही? हाँ हाँ वो बिजी है ना अभी। अभी गुस्से में देखो। अरे अरे क्यों? क्योंकि मैंने क्यों? मेरे को क्या मालूम। अच्छा ठीक है सर, उसके बारे में बात करेंगे ऑफलाइन. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम गाइस. Yes, So yes. yeah, Oh wow. yeah. तो any closing thoughts, Reba ji? Yes, just one closing thought, and I thought of this, earlier on as well, and basically echoing what everybody here has said, that the portrayal of NRIs of NRIs needs to be more realistic, and it also has to be about the various stratas of Indians living here. So when I say stratas, I mean the lower middle class, Correct. middle class, upper middle class, not just the very rich or the ones who are not who are struggling. Yeah. So definitely a better portrayal. We are not all So like Chatur. yeah, We're on not the same, Chaturs. I want to add something. Sure. Of course, of course. Although we How can she add when you are making that? बोलो ना. बोलो ना हम please. पूछने वाले थे दीपा जी, आप क्या कहना चाहते I'm हो? coming to Deepa. हाँ बोलो okay, बोलो. ठीक है. हाँ. Although we expect God, Come on, guys. we expect that, लेकिन it's very tough क्योंकि उन हमारे नजरिए से सिर्फ हम लोग सोचते हैं. It's all about the perception and how we see things. हमारे पहलू से either we have to do, or it's very hard for them to judge same way we do that for them. What's he doing? एक कुछ क्या Why? क्यों? दीपा बदल गई. एक शो में दीपा बदल गई. क्यों? मेरा इन्फ्लुएंस है. मैंने कुछ नहीं बताया. देखो दीपा, I didn't say anything, okay? वो गुस्से से लाल हो रही है, शर्ट भी लाल हो गया. So I know, लेकिन ये NRIs इधर के लोग बनाते हैं ना. Those are NRI movies if you think in that direction. वो हमको देखने चाहिए, and which most of them we don't like. Either it's Ego problem. no, it's not ego. It's about the storytelling and technology and Quality. acting सब चाहिए ना. तो हमको ये क्या बोलते हैं उधर वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. That's the issue. That's the problem with it. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. Yeah? Greedy people. That's what it's saying. End of the day, Deepa ji has said that we are greedy people. I understand. We want this or that. We want the best of both worlds. नहीं, I think Best of both worlds. yeah. I know, that's why being greedy, na? Best of both worlds what you want. We don't want to compromise. Perspective. I will just say these two words and give it to Father with the conclusion summary. Father, please continue. No, what are the two words? Bye bye. What were you Greedy doing? people. Huh? Greedy people. Oh my Two God. words. People living out of India want to have the cake and eat it too. No. Yes, you want the best world of that, best of both worlds you want. Extremely hardworking नहीं, Who? मैं आज जो Indians outside India. जिस True. I like Sorry. Your own perspective, right? Yeah. True. नहीं, I am agreeing with her. I know your own perspective that you are working. Yeah. You say Don't you guys work? हम लोग सब. No, I don't We work. it's harder for the people. नहीं, but people all over the world work hard. We Correct. can't determine कि इंडिया में जो कि यार सुबह से लेके शाम तक जो किसान Yes. काम Correct. करते हैं वहाँ पे, जो हमारे बॉर्डर पे लोग खड़े हैं और अपने जान को दाव पे लगा के दे आर प्रोटेक्टिंग, एंड इंडिया इज अंडर अटैक, द थ्रेट ऑफ अटैक ऑल साइड्स, every single side, right? So we can't say that there's any one particular group of people that are very hardworking. True. But at the end of the day हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड नहीं बोलते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर इज जस्ट फिल्म. वो फैंटेसी है. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट born and raised in India and haven't had the lived experience in India, treat it as fantasy. Just like you would watch Doctor Strange in the multiverse or whatever. Correct. Just like that, think of this also as fantasy. Do not believe that there is going to be a Shah Rukh Khan who'll jump out from the bus stop, or there would be a Tiger Shroff who'll come and who'll rescue you as Or a you'll never damsel find a in Katrina distress. Kaif in life. Nor or that you could marry your celebrity crush like Ranbir Kapoor and all that stuff. So it really, no, it doesn't happen. Didn't happen with me. So anyway. Sorry. No, But I'm just Deepa can't kidding. say that about it. No, I'm just kidding. Well, let's just say, so it's fantasy. But at the same time, Bollywood also has a message. We have a message for you, Indian film industry, कि जब आप हमारी जो भारत है, like, one thing that I really did not like at one point in time is the NRI filmmakers जो भी हैं, like the Meera Nayars of the world,
whatever you may say, they portrayed the negative aspects of India and everything that's wrong with our country. They cash on it, no? Yeah, Yes. the slums of Mumbai, Yeah. the prostitution. Yeah. Yes, there is a dark side, but there's also a good side to our country, and every country has that. That way, if you look at it, there is prostitution here also. Yeah, exactly. There is homelessness here also, Oh which my is God, rampant. these days. There's so much of that stuff that's going on. So, at the end of the day, जो भी हम लोग बताना चाहते हैं, एक thought provoking cinema बनाना चाहते हो, तो thought provoking बनाओ. ये ऐसे negative connotation के साथ कोई मूवीज मत बनाइए जहाँ पे लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाए कि हमारे खुद की जो देश है या विदेश है उससे उनको चिढ़ या एंग्स्ट होने लगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट टू से एट द एंड ऑफ द डे कि विदेशी वीरवार में जो भी हो जहाँ पे भी हो, like Deepa said at one point, you can take an Indian out of India but you can't take India out of the Indian, and you can take, that is exactly what it is, you can't take the Des out of the Desi, and you cannot take the hotness out of the dehotty. क्या बात है. तो जो हमारी ऑथेंटिसिटी है उसके साथ हम आपको बोलने वाले हैं कि उसको बनाए रखिएगा. जो आपका कल्चर है, डू नॉट लूज दैट. एट द एंड ऑफ द डे जो अकल्चरेशन होना चाहिए वो अकल्चरेट करिए, एसिमिलेट मत हुई. Don't lose your authenticity and your identity. क्या heavy words फालतूनी. दिमाग घूम गया मेरा. Of course. घूमने गया. ये अभी जो मूवी आई ना व्हाइट टाइगर, नहीं देखा. कौन सा वो? We Black Tiger. scolded together ना, वो प्रियंका चोपड़ा का. वो व्हाइट टाइगर, right? What is that movie? Pathetic. Oh Lord. And really, to the Priyanka Chopras, Mindy Kalings, and all these other people, Deepa Mehtas of the world, Kelly Kapoor. please stop perpetuating stereotypes and cliches. Please understand कि वो हम appreciate नहीं करते हैं. और इंडियन लेडीज बोले तो आंटी लोग नहीं है जो सिर्फ गॉसिप मारते रहते हैं. And they have there's a lot more substance to our women than the Indian auntie stereotype. Yes. पहनाव पे इस पे मत जाओ. जहाँ ये जो यहाँ है that matters. Right. The white tiger श्रॉफ achieved. White tiger soft. Oh God, that is funny. इसी के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे बुद्धिजान. We hope this was yet another thought-provoking show. Thank you Vibhaji for joining us. Thank you so much for Deepa having me. for joining us. हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए मोहम्मद बच्चन साहब, थैंक यू रेवा जी. And Antu Baba, हम सभी आपको फिर से मिलेंगे कल यहीं पे ऑन रेडियो रिहॉरीज. गुड नाइट चंबा खैर एंड प्यार भरा. Hi, I'm Shekhar Rafjiani. You're listening to me on Radio The Hotties, where entertainment keeps getting hotter.